Hello students, today we are going to discuss calculation short trick, and in this also we will discuss traditional method first and then we will discuss short trick so that you will be able to solve the question within 5 seconds. So let's start. So whenever you come across such type of format now, in such a way that root 5 inside there is one more root 5, inside there is one more root 5, and this continues till infinite. So how will you do this? So let me solve it. See, we know very well, first step is whatever the thing is given, whatever the format is given to you now, just write like this: x is equals to under root 5 until infinite. Okay, so we can write like this now: x is equals to root 5x, because we know now this part is also x, so we can write x is equals to root 5x. Okay, then आगे अगर solve करना है, then we will do the squaring on both side. So x square is equals to 5x. Clear? So 5x को इस तरफ ले आते हैं, x square minus 5x is equals to 0. Then x common आ जाएगा, x minus 5. So from this, when you will solve, x is equals to 0 and x is equals to 5. See, x can't equals to 0 ना, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पे रख दें, ठीक है, तो हमारा आंसर ही क्या होगा? Not defined. So we will neglect this value and answer will be x is equals to 5. This will be the answer. Clear? So let's do one more question. Suppose such type of question is given to you: under root 7, inside there is under root 7 until infinite. Okay, so what I have told you कि first of all, the first step is whatever the format is given to you now, just write like this: x is equals to root 7 until infinite. So what will you do? x is equals to root 7x. Okay, उसके बाद क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. x square is equals to 7x. Okay, then x square minus 7x is equals to 0. Then taking x common in both sides, x into x minus 7 is equals to 0. So you know very well कि x can't equals to 0. So answer will be x is equals to 7. Clear? This will be your answer. Okay, have you understood? So now I am going to tell you the short trick related to this. See, whenever you came across such type of format now, here x is any number, so just your answer will be equals to x. Okay, whatever number is present inside now, that will be your answer. Okay, so this was very easy short trick, and let me discuss the next type. Okay, type 2. So see, suppose such type of format is given to you: under root 7, inside there is under root 7, and it is not continue like previous type of question ना, कि till infinite यहाँ तक ही है, ठीक है, till infinite तक नहीं है, यही तक है, root 7 inside root 7 and root 7. Okay, then सबसे पहले हम इसको solve कैसे करेंगे, इसको देख लेते हैं. So सी यू नो वेरी वेल कि जब भी रूट 7 लिखा होता है तो यू नो वेरी वेल ना कि वी नो अबाउट कि 7 की पावर रूट 7 है. इट मीन्स यू कैन राइट लाइक दिस, 7 की पावर 1/2, isn't it? So we can write like this. Let's take x is equals to, सबसे पहले तो आप ऐसे ही कर लेंगे, x is equals to root 7 एंड इसको आप हम मान लेते हैं. ओके, रूट 7 एंड ये आपका 1 2 3 4 5 टाइम्स है. ओके, देन सॉल्व इट. सी, वी कैन राइट लाइक दिस: x इज इक्वल्स टू 7 की पावर 1/2, देन 7 की पावर 1/4, देन 7 की पावर 1/8, देन 7 की पावर 1/16, देन 7 की पावर 1/32. ओके, देन सॉल्व इट taking LCM on both sides. Okay, and
फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. वी नो वेरी वेल अबाउट द फॉर्मूला ना, एक्स की पावर m. ओके, अगर पावर्स क्या हो रही हैं, एक्स की पावर m इंटू एक्स की पावर n का फॉर्मूला लग जाएगा एक्स की पावर m प्लस n होता है. ठीक है, पावर विल बी एडेड. ओके, whenever you will come across such type of format, the powers will be added here. So you will apply the formula and you will get 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16 plus 1 by 32. Okay, then solve it, taking LCM on both sides, LCM in all the powers terms. So you will get the answer. LCM is 32. So 2, when 32 is divided by 2, you will get 16, and 16 is multiplied by 1, you will get 1. When 32 is divided by 4, you will get 8, and 8 is divided by 1, you will get 8. Then 32 is divided by 8, you will get 4, and 4 is multiplied by 1, you will get 4. Similarly, 32 is divided by 16, you will get 2, and 2 is multiplied with 1, you will get 2. Then 32 is divided by 32, you will get 1, and 1 is multiplied with 1, you will get 1. Okay, so solve it. 16 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1, you will get 31. So your answer will be 7 की power 31 by 32. Okay, this whole 31 by 32 will be in power. Okay, so if I am going to write in pen na, then you will write like this: 7 की power 31 by 32. Okay, so let me take another example. Suppose in this way, when you have taken this question, so under root 5, inside there is one more root 5, and inside there is root 5, and inside also there is root 5. So solve it. X is equals to 5 की power 1 by 2 into 5 की power 1 by 4, sorry, then 5 की power 1 by 8, then 5 की power 1 by 16. Okay, then using apply the formula here, x की power m into x की power n is equals to x की power m plus n. So powers will be added. So solve it. 5 की power 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 8 plus 1 by 16. Okay, then solve it. See, here you will get the LCM 16. Okay, when 16 is divided by 2, you will get 8, and 8 is multiplied by 1, you will get 8. When 16 is divided by 4, you will get 4, and 4 is multiplied by 1, you will get 4. Then 16 is divided by 8, you will get 2, and 2 is multiplied with 1, you will get 2. Okay, then 16 is divided by 16, you will get 1, and 1 is multiplied with 1, you will get 1. So solve it. So 5 की power ये आपका आ जाएगा आंसर 15 by 16. Okay, and here also 5 की power 15 by 16. Okay, this will be the answer. So I am going to reveal the secret related to this type of format. How will you solve it when you get such type of questions in competitions? Because in competitions there is no time now, so that you can, so you need to solve it within 5 seconds or 6 seconds. So the short trick is, whenever you will get such type of format, root x, inside there is one more root x, and so that's in such a way that it is not continue till infinite. Okay, यहाँ पे आपके 3 टर्म्स हो सकते हैं, 4 टाइम्स हो सकता है, 5 टाइम्स हो सकता है. जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके 5 टाइम्स था, यहाँ पे आपका 4 टाइम्स ही था, तो यहाँ पे आपका 3 टाइम्स था. तो द फॉर्मूला इज x की पावर 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n. ओके, हियर n इज जितनी बार आपका x रिपीट हो रहा है, मतलब जितनी बार x आया, यहाँ पे 3 टाइम्स आया है, तो हियर n इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व इट बाय यूजिंग शॉर्ट ट्रिक. सी, व्हेन यू विल अप्लाई द फॉर्मूला ना, इज इक्वल टू x 1 minus 1 upon here 1 minus 1 upon 2 की power n will be the formula ना. So 1 minus 1 upon 2 की power 3. So here
n is 3 बिकॉज x 3 टाइम्स आया है। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/8 एंड यू विल गेट x की पावर 8 माइनस 1 यू विल गेट 7/8। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? सो इट डिपेंड ऑन किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। ओके अगर 7 है, अगर सपोज यहाँ पे x 7 चल रहा होता तो x की वैल्यू यहाँ पे आपकी 7 होती, 7 की पावर 7/8 होता। क्लियर? यहाँ पे आप अगर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x की ये x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n, देखो आप यहाँ पे लगाएंगे अगर x की पावर 1 माइनस 1/2 की पावर n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x क्या है 7 है एंड 1 माइनस 1/n यहाँ पे कितना चल रहा है 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5। तो इसको आप सॉल्व करो, 2 की पावर 5 होता है 32। ओके सो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस 1/32 एंड व्हेन यू विल सॉल्व यू विल गेट 7 की पावर 31/32। सो दिस विल बी योर आंसर। ओके सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस शॉर्ट ट्रिक एंड ट्रेडिशनल मेथड एज वेल, और just practice it at least 10 times, okay, so that you can easily solve it. okay so आगे फिर मिलते हैं एक नई शॉर्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।